Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. To learn mathematics, गणित को सीखने के लिए there is one and only one rule, that the practice and practice and practice. How to learn the mathematics? First, you go through the basic concepts comfortably, revise it again and again. As soon as you have learned the concept, solve the problems based on the concept. Then practice and practice and practice. So we will find the minute observation you have learned in the concept. In the last video, we have seen how to find the angle between two lines in which the plane cuts the cone. पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एक समतल जब किसी शंकु को दो लाइंस में, दो रेखाओं में काटता है तो उनके बीच का एंगल जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 12th में आपने पढ़ा है 3D के अंदर एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा, डायरेक्शन कोसाइंस L1, M1, N1, and direction cosines of this line L2, M2, N2. Remember, I have used the word direction cosines. Stick with it. So L1 square plus M1 square plus M square will be 1. Similarly, L2 square plus M2 square plus N2 square is 1. So angle between these two lines is theta. Then you people know that cos theta is given by L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. This is the value of cos theta. If these two lines are perpendicular, means theta is 90, cos 90 is 0. So L1 L2 plus M1 L2 plus N1 N2 is equal to 0. Maximum problems to be asked on condition of perpendicularity. I took one more example. Prove that the plane AX plus BY plus CZ equals to 0 cuts the cone YZ plus ZX plus XY equals to 0. In perpendicular lines, the name is given perpendicular lines. So L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is 0 if the condition holds 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C is equal to 0. So let us see. Suppose X upon L, Y upon M, Z upon N be one of the lines in which the plane AX plus BY plus CZ equals to 0 cuts the plane. Which one? YZ plus ZX plus XY equals to 0. Remember, the equation of the cone is homogeneous. So vertex is 0, 0. That's why I took the line x minus 0 upon n, y minus 0 upon n, z minus 0 upon n. So here it is. This is the big vertex, that is 0, 0, 0. The plane cuts the cone. The plane cuts the cone in two lines. Here it is. These are the two lines. One of the lines I have taken x upon n, y upon n, z upon n. So these two lines, so L and N, one set will be L1 M1 M1 and other will be L2 M2
and 2. Okay, so as usual, we consider one point, general point, that is LK, MK, NK. Since the line is in the plane, ये समतल में भी है और शंकु में भी है, इसलिए ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा. ध्यान रखना है, यहाँ से k कॉमन निकलेगा, वो जीरो में चला जाएगा. इसी तरह से, इसलिए इसे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा. एल एम एन जो है एक्स वाई जेड को सीधा सीधा एल एम एन से रिप्लेस करना है. Therefore, here it is an plus bn plus cn equals to 0 and mn plus nl plus ln equals to 0. This is equation number 1 and this is number 2. कैसे ज्ञात किया हमने इसको, कैसे फाइंड आउट किया? इस लाइन पर, ये जो लाइन है, एक पॉइंट ले लिया हमने, इसके ऊपर वो जो लाइन ली है दैट इज x upon l, y upon m, z upon n, and this is equals to k. See, so the point is lk, mk, nk. जैसे आप x y z को इससे रिप्लेस करोगे तो k कॉमन आ जाएगा, an plus bn plus cn टाइम्स k, then it is equals to 0. तो इसलिए मैं जब कहता हूं कि जब शंकु का शेष मूल बिंदु हो 0,0,0 हो तो एल एम एन उसको सेटिस्फाई करते हैं. एक्स वाई जेड की जगह आपको एल एम एन लिखना है, ये गांठ बांधना है इस बात को. सो हियर इट इज दिस. पिछले वीडियो में भी, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी नहीं थे, यहाँ पर नंबर्स थे, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी. आप याद करो उसको. दैट वाज 2l स्क्वायर प्लस 4ln माइनस ln माइनस l m स्क्वायर इक्वल टू 0. आई होप 2m स्क्वायर इक्वल टू दिस. इन द लास्ट वीडियो जब हमने एंगल को कैलकुलेट किया था, 2l स्क्वायर प्लस 4ln माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू, जो नंबर्स हैं 2 4, इसके फैक्टर्स किए थे. अब भी वही काम मैं यहां करूंगा, n को एलिमिनेट करूंगा. जरूर नहीं कि आप n को एलिमिनेट करो, l को भी कर सकते हो, m को भी कर सकते हो. सो ऑन एलिमिनेटिंग n from first and second we get समीकरण 1 और 2 से n का विलोप करने पर, यहां देखिए, यहां से मैं n का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा. दिस इंप्लाइज व्हाट इज n? n इज माइनस an प्लस bn अपॉन c. किसका वैल्यू हुआ है? n का वैल्यू. यहां से देखिए मैं n कॉमन लूंगा. सो इट इज l प्लस m टाइम्स n. क्या बनेगा ये? वेट, डस्टर 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 डस्टर. Okay. So here it is n. So l plus m. N is common, so instead of n I write a plus bn upon c with negative sign. So put negative sign this side, and plus ln equals to 0. We simplify this. Okay. So it is CL minus L plus M into A plus BN equals to 0. CLN minus AL square plus BLN plus ALN plus bn square.
AL square plus BLO, then plus ALO and plus BL square equals to 0. Okay. Transfer the terms, that's it. So it is AL square plus A plus B minus C times ln, then plus BL square equals to 0. Here it is this. This is the quadratic equation. जैसे ये था लास्ट वीडियो में हमने ये किया था, लेकिन यहां फैक्टर्स हो गए थे, मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया था, लेकिन यहां थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि यहां पर अननोन है. सो इट इज AL स्क्वायर प्लस A प्लस B माइनस C LN प्लस BL स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ध्यान रखना, यदि मुझे एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोलता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, लेकिन मुझे ऑलरेडी दे रखा है. If lines are perpendicular, then prove that 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C equals to 0. And whenever lines are perpendicular, the condition hold L1 plus L1 L2 plus M1 M2 plus M1 M2 is equal to 0. So मेरा जो पर्पज है वो इसको इस फॉर्मेट में कैलकुलेट करना. जरूरी नहीं कि L1 M1 N1 की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करो, L2 M2 N2 की अलग अलग वैल्यूज करो, मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए. दैट्स ऑल. ओके, सो हियर यू से, सो हियर आई चेंज द प्रोसेस. हियर फैक्टर्स possible factorization, but here it is a little difficult, so I'll write on transfer dividing by m square by m square or L square, whatever it is. So it is A times L by m whole square plus A plus B minus C times L by m plus B equals to 0. This is quadratic in L by m. द्विघात समीकरण है किसमें? L by m. और जब द्विघात समीकरण होगा तो आपको मालूम है कि उसके दो रूट्स होते हैं. लोअर क्लासेस में हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो उसके रूट्स लिए थे अल्फा बीटा. जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा x में क्वाड्रेटिक है तो आपने x1 और x2 ले लिए, y में क्वाड्रेटिक है तो y1 और y2 ले लिए. यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है. दिस इज क्वाड्रेटिक इन L by m. सो सपोज रूट्स का मतलब मूल. सपोज रूट्स आर, जैसे x1 लिखते थे तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा कि L1 M1 एंड L2 M2. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक L by m में है, इसलिए जो रूट की प्रकृति होगी, इसका जो नेचर होगा, लिखने का जो तरीका होगा, वो L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2, जैसे x1 x2 y1 y2 t1 t2. सो रूट्स आर दिस वन. अब जब रूट्स आपने ये सपोज किए, मैंने आपको पहले कहा था जरूर नहीं कि मुझे अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करके मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं. मुझे इस फॉर्मेट से मतलब है. यहां अलग अलग रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, वेरी डिफिकल्ट. बट इफ आई राइट दिस वे, देन यू पीपल नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणा और मूलों का योग. मूलों का गुणा c अपॉन a, मूलों का योगफल दैट इज माइनस b अपॉन a. Therefore, products of roots क्या होगा? C upon a. C means constant, so ये term C means B upon A हो रहा है, that is B upon A. Product of roots क्या है? L1 M1 L2 that is समझ में आ रहा? ध्यान देना. इट इज L1 अपॉन M1 L2 अपॉन M2, क्योंकि रूट्स ये दो रूट्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा. देन इट इज
L2 upon L1 L2 A times L1 L2 equals to B times M1 L2. You can see this implies L1 L2 upon 1 by A equals M1 M2 upon 1 by B. Note this step. This is L1 L2 is 1 upon A, M1 M2 1 upon B. कैसे हुआ? जब आपने n को एलिमिनेट किया, जब n को एलिमिनेट किया तो L और M में इस तरह से रिलेशन आया है। यदि आप L को एलिमिनेट करते, किसको? L को, तो M और N में आता, तो क्या मिलता? M1 M2 देन N1 M2। तो सिमेट्री से देखो, M1 M2 upon 1 upon B and N1 M2 1 upon C। So by symmetry सीधा लिख सकते हैं, सममिति by symmetry L1 L2 1 upon A, L1 M2 upon 1 upon B, L1 M2 1 C। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने जब n को एलिमिनेट किया तो आपके पास में ये सिचुएशन है। n को यदि मैं l को करता तो ये आते, l को एलिमिनेट करता तो ये हो जाता, m को एलिमिनेट करता तो इससे हो जाता। सिमेट्री से मैं ये पैटर्न लिख सकता हूं। उस वर्कआउट को आप छोड़ सकते हो। ध्यान रखना है, मेरा एम जो था वो इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करना था, इस वाले हिस्से को। अब पिछले वाले वीडियो में क्योंकि नंबर्स थे इसलिए एक्सप्रेशन इस तरह से था, तो फैक्टर्स हो गए और मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस भी कैलकुलेट कर लिया और उन लाइंस की इक्वेशंस भी कैलकुलेट की थी। लेकिन यह थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चन में दे रखा है इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रूव दैट। लाइंस परपेंडिकुलर तो मुझे इसको 0 के इक्वल लिखना है। नाउ यू कैन से L1 L2 upon this, M1 M2 upon this, N1 upon this. Now let us suppose this is equals to any constant. ध्यान रखना ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, proportional to some constant. So L1 L2 equals 1 upon A times lambda. Let us suppose this is lambda. Say therefore L1 L2 is lambda times 1 upon A, M1 M2 lambda times 1 upon B, and N1 N2 lambda times 1 upon C. It will be this. Okay. Then lines will be perpendicular if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0 implies lambda times 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C equals to 0. So value substitute करो, this implies 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C equals to 0. So this is the way to solve the question. When the plane समतल कर्ष कोण शंकु को काटता है, किसमें? दो लाइंस में। ध्यान रखना, वो दोनों लाइंस वो जनरेटर्स है, क्योंकि वो शंकु के सरफेस के ऊपर है, वो जनरेटर्स है, और वो समतल के ऊपर भी क्योंकि उसका हिस्सा है। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल करके, शंकु को काट के। So if two lines be perpendicular, then this is equal to 0. So our aim is not to calculate the separate values of this one and this one. We people are interested to find this pattern. So we have used the nice application of quadratic equation, this product of roots and sum of roots. We not used here because we want to find the situation. Now see the application, because this question is very important. So let us see.
This is a standard question and asked in the competitive examination. But you see, if we use this, then it is time consuming. So, recall what was the question? Prove that the plane, prove that if the plane ax plus by plus cz equals to 0 cuts the cone yz, cuts the cone yz plus zx plus xy equal to 0 in perpendicular lines, then 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c equals to 0. Prove that if the plane cuts the cone in perpendicular lines, then 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c equals to 0. परपेंडिकुलर लाइंस के जगह में परपेंडिकुलर जनरेटर्स भी लिख सकता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है. Then 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c equals to 0. We have proved it. Now the question is, if 2x minus y plus lambda z equals to 0 cuts the cone yz plus zx plus xy equals to 0 in two perpendicular generators, find the value of lambda. क्वेश्चन बना दिया. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. If 2x minus y plus lambda z equals to 0 cuts the cone this in two perpendicular generators, these lines, find the value of lambda. So you remember this, otherwise it is time consuming. यदि आपको ये याद है तो इस क्वेश्चन को विद इन 5 seconds आप कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल है. So here it is, 2x minus y plus lambda z equals to 0. If we compare this one with this, then see what is a 2, what is b minus 1, what is c lambda, and here it is, that is yz plus zx plus xy equals to 0. So what is the condition? 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c equals to 0. Therefore 1 upon a means 2, minus 1 upon b means plus 1 upon lambda, c means lambda equals to 0. So I hope lambda equals to 2, minus 2. Yes. No. Wait. Sorry. This is minus half, 1 by 2, minus half plus 1 upon lambda equals to 0. So this implies lambda is, yes, half plus half, 1 minus 1. So lambda is 2. So this is the way to solve the question in competitive examination, but this must be remembered that if you have a lot of time, then you solve this question as usual this. So you can find the value of lambda. So I hope you have understood. Thank you very much. Jai Hind.